Good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to Jahaneman. Girls with the big dreams are the women of big visions. Yes, now I can see such a girl in front of me. The girl who had the dreams, today she has become a woman of vision. I'm talking about Nida Maqbool. Nida Maqbool, who is the director of Care Corner Ranchi. And she has been selected by Jahaneman as Women of Substance. So Nida, welcome to the show and congratulations for being selected as Women of the Substance. Thank you so much and hello everyone. How are you, Nida? I am fine, ma'am. Nida, you have been selected as Women of Substance. I know that how much you have worked hard to reach to this place. You are a certified counselor, then you have started a counseling center, and in such a place like Ranchi, where there was no awareness about counseling and then family therapy and all these type of things. I request you to kindly throw some light on your struggle and on your achievements. Okay, so I have done my schooling and college from Delhi. So I am a product of Delhi University and I did my MSc in Human Development and Childhood Studies. I did a diploma in Early Childhood Care and Education. I did a diploma in Family Therapy, and as well as I also did a certificate course in Relationship Counseling. And then in 2010, I got married and came to Ranchi. And when I came to Ranchi, most of the people, they were not much aware of my profession. तो वो मुझे हमेशा बड़े लोग ये सजेस्ट करते थे कि एक बार MA इन साइकोलॉजी कर लो ताकि तुम्हारा साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड हो जाए और फिर तुम्हें कहीं भी जॉब मिलने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि MSc इन ह्यूमन डेवलपमेंट हमने नहीं सुना है. बट देन आई थॉट कि फिर से सेम डिग्री लेने से अच्छा है मैं क्यों ना इसको फर्दर आगे बढ़ाऊं. So फिर मैंने PhD in Human Development करने का सोचा and as well as I started applying for jobs in Ranchi. मुझे लगा जो भी first school मुझे approach करेगा, I'll join that school, irrespective of how much they are paying me or whatever is the criteria. So I applied in 4-5 schools in 2010 at the end of 2010. And in 2011 only एक ही महीने में, मतलब मैंने दिसंबर में अप्लाई करा था, मुझे जनवरी में जॉब मिल गई थी. And I started practicing as a school counselor in Sapphire International School in Ranchi. So that's how my journey began as a counselor. फिर I was blessed with a child in between in 2013. So मेरा बीच में थोड़ा सा टाइम का गैप आ गया. But then I was still associated with other schools. बहुत सारे स्कूल्स में मैं रांची में एज अ विजिटिंग काउंसलर कनेक्टेड रही. मैंने अपने प्रोफेशन को छोड़ा नहीं. एंड इन 2015 I started my own guidance and counseling center since I had the degree and I was now I will not say well experienced, but I was little experienced and I knew इस फील्ड में बहुत ज्यादा रांची में जरूरत है to give more importance to, क्योंकि mental health ये 2020 में इतना hype हुआ है मैम, to be honest. पहले इस चीज को इतनी importance नहीं दी जाती थी. और आज भी अगर लोग काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास आते हैं तो 50% ऑफ द लोग झूठ बोल के आते हैं कि या तो हम शॉपिंग करने जा रहे हैं या किसी से मिलने जा रहे हैं. मतलब they don't actually, people actually hide mental health issue. It is still a taboo in India. So that's what I wanted to break this apprehension, especially in Ranchi. So I started with this guidance and counseling center, and I will not say it is, blooming, but yes, it is flourishing. चल रहा है, लोगों का अच्छा response है. बच्चे, teenagers खुद से आते हैं, खुद से they want to, talk to a therapist जब उन्हें लगता है कि there are people who are not understanding. There are young adults who come to me. There are couples who have started approaching. So मुझे लगता है my purpose of opening the center is gradually it is becoming successful. So let's see where it takes me. Yeah, your story is quite inspiring, Nida, that you have started your journey from
serving in the schools, and then you thought that it's better if you can have your own center, and gradually in the area, that area where the people, they even don't talk about that. And even if we realize and we know that we need help in this regard, but nobody is ready to take the help in this regard. The people, they consider that only physical health is considered as health. If you have cough and cold, immediately you will go to the doctor, and you will take so many medicines and then antibiotics and whatever you do for a small little pains and anything. But if there is any trouble in your mind, if you are not feeling well, if you are emotionally low or sad, or something is troubling you, you always just try to keep those things inside you. Nobody wants to speak out, to speak up, and to go and take the professional help. So that's really, gradually the things will change, because the person doesn't have only physical health. The person is made up of so many areas. Your spiritual area is important, your mental health is important, your social health is important, your emotional health is important. And all these areas make a person a complete human being. So thank you very much for taking up such a challenging task, and God bless you. Now coming to this International Women's Day, we are celebrating full month, Jahannaman is celebrating, and we are highlighting the achievements and contributions of women. We have selected the theme as emotional fashion. So what is your understanding of emotional fashion? And do we really need to fashion our emotions? Okay. तो लाइक वी ऑल नो, अभी तक मुझे लगता है बहुत सारे मोहतरमा आए हैं जिन्होंने शायद इमोशंस पे बहुत सारी बातें की होंगी, एंड आज की तारीख में सभी जानते हैं कि वी ऑल हैव 6 बेसिक इमोशंस. इट्स बीइंग हैप्पीनेस, बीइंग सैड, फियर, सरप्राइज. ये हम सब जानते हैं. हम सब में कुछ बेसिक इमोशंस, जो कुछ इननेट इमोशंस होते हैं. सो हाउ आर दे रिलेटेड टू द क्लोथ्स वी वेयर और द फैशन एरा इन विच वी आर इन? टू बी ऑनेस्ट, अगर आप अपने रोज का शेड्यूल देखो तो सुबह उठ के आप सबसे पहले क्या करते हो? अ पार्ट ऑफ योर रूटीन इज टू डिसाइड कि व्हाट एम आई गोइंग टू वेयर. इफ यू आर गोइंग फॉर अ जॉब, अगर आप जॉब पे जा रहे हो, जॉब पे नहीं भी जा रहे हो, अगर घर में हो, अगर किसी फंक्शन में जा रहे हो, सो आपका जो दिन का 1/4 तो मैं नहीं कहूंगी, बट मॉर्निंग रूटीन ये होता है कि ओके, टुडे इज दिस डे, I will wear this. Today I am going to this party, so I will wear this. So you arrange your clothes or dresses. Now, there are fields which have the designated clothes, like उनके already जहाँ पे option नहीं है, जहाँ पे आपकी uniform है, ठीक है? So people associate you with your clothes. जैसे कि nurse, हमें पता है एक nurse जो कपड़े पहनती है, हम उसको directly associate करते हैं कि she is the caretaker. एक फायर एक्सटिंग्विशर है, अगर वो कोई यूनिफॉर्म पहनता है तो हम जानते हैं अगर आग लगेगी वो वाली कलर की यूनिफॉर्म दिखेगी, अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर आया है. सो देयर आर पीपल हु हैव डेजिग्नेटेड यूनिफॉर्म्स, देयर आर पीपल हु हैव फ्रीडम टू चूज व्हाटएवर दे वेयर. एंड ट्रस्ट मी, when you have freedom to wear freedom to to wear whatever you want to wear, or freedom to choose your clothes define you as a person a lot. वो आपको बहुत डिफाइन करते हैं. हाउ पीपल परसीव यू, हाउ यू परसीव योरसेल्फ. नॉट टॉकिंग अबाउट इमोशनल फैशन, आपके वार्डरोब में कोई एक कपड़ा ऐसा होगा जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो, और कोई एक कपड़ा ऐसा होगा जो शायद आज की तारीख में आपको फिट नहीं आता है, पर आप किसी को देना भी नहीं चाहते हो. सो वो क्या है? दोज आर आवर सेंटिमेंट्स अटैच्ड टू द क्लोथ, बिकॉज समटाइम्स what we wear actually defines us. So that's why people have so much emotional connection with the clothes or garments they wear. लेकिन बहुत से कपड़े ऐसे भी होंगे निदा, बहुत से कपड़े ऐसे भी होंगे वार्डरोब में जो आपने एक बार पहन करके और फिर उसको आपने हाथ भी नहीं लगाया, और वो वार्डरोब की जीनत बने हुए हैं. तो और ऑनलाइन वाले तो मैम कुछ ऐसे भी होंगे जो ऑनलाइन आ गए हैं वो, और वो इतने बेतुके हैं कि फिर आपने एक बार भी नहीं पहना है उसको, बल्कि खुला भी नहीं होगा पैकेट तो कहीं का. तो इन सब के जो जिनके अंदर ऐसी मतलब शॉपिंग मेनिया होती है या क्लोथ मेनिया होता है, दे थिंक दैट मोर एंड मोर दे कैन बाई, बिकॉज कहा जाता है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनी सैलरी का इंतजार ही इसीलिए कर रहे होते हैं कि जब सैलरी आएगी तो कम से कम 2-4 ड्रेसेस और बन जाएंगी, नई ड्रेसेस बन जाएंगी. तो इसके बारे में आपको, इस हैबिट के बारे में आपका क्या ख्याल है?
देखिए, एक्चुअली में अगर आप देखो, सो फैशन इंडस्ट्री हैज डिजास्टर्स इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट. अगर आप देखें तो इट इज कंसिडर्ड, आई थिंक, द सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटर ऑफ द इन्वायरमेंट. क्यों? क्योंकि people who can afford, they have endless number of clothes. They don't see कि हम recycle कुछ कर सकते हैं या नहीं. They don't see कि हम इसको कुछ modify कर सकते हैं या नहीं. They don't realize कि अच्छा इसका कुछ pattern change करके कुछ कर सकते हैं या नहीं. How can I reuse my clothes? If I am blessed with sufficient income or money, maybe I will not want that, and I will just go out and pick up a dress, which is actually a wrong habit. अगर आपको बहुत सी पार्टीज में, सॉरी फॉर स्टैमरिंग सो मच, पर बहुत सी पार्टीज में रिपीटिंग क्लोथ्स इन इंडिया उसको बहुत इनकरेज नहीं किया जाता है. एंड वी ऑलवेज एंड अप सेइंग, यार ये वाली ड्रेस मैंने पिछली शादी में भी पहनी थी, अब इसमें भी पहन लूंगी, तो सब लोग कहेंगे कि एक ही साड़ी है मेरे पास. तो हम अपने आप को खुद ही जज करने लगते हैं अपने कपड़ों से. अगर आपके पास वाकई एक अच्छी एक्सपेंसिव साड़ी है और आपको लगता है भाई मैंने 20-25,000 इसके लिए खर्च करे हैं, दैट इज लाइक 50-60% ऑफ माई सैलरी, सो आई शुड नॉट केयर व्हाट other person is saying about me. I should care more कि भाई I have spent so much of money and at least I should have courage to reuse that thing again and again. That's what I'm trying to say. Very true, Nida. Very true. And like somebody has to take the initiative. Somebody has to take the lead in this regard, because this has become too much now. It is like so much burdening. Everybody is under this stress and pressure, but nobody is ready to change. Nobody wants to change this, but we have to bring this change now. That dress should not decide our status. Dress should not decide our mindset or our character. It's our inner beauty, it's our strength of the character that decides, and not repetition habit should be stopped. I think I should give the award to that person who has worn one cloth in many parties or many functions or many marriages. Especially I do that. I either change my dupatta style or I do something, but I keep on wearing few stuff again and again जो मुझे पसंद है. Like I said, जिससे emotional connection है, जिसमें मैं ज़्यादा confident feel करती हूँ, जिसमें मुझे लगता है यार मैंने बहुत spend करा है and I need to reuse it. So I am not ashamed of wearing it again. Okay, so Nida, this International Women's Day, what is your resolution for yourself, and what have you prepared for yourself being a woman? A resolution, I will just say that actually being a woman, you are the one who can save yourself. That's what I have always believed. हमें हमेशा किसी का वेट नहीं करते रहना है कि मुझे कोई बचा ले या मुझे कोई सेव कर ले या मेरे लिए कोई सपोर्ट बन जाए या कोई हेल्प कर दे. अगर मैं चाहूँ तो I have endless number of possibilities and I have endless number of potential in me. But being women, हमारे साथ बहुत सारी चीजें इतनी अटैच होती हैं. We have family issues, we may have biased bosses, we may be underconfident, and trust me, lack of ambition. Many women I come across, they have they have no ambition. So I would just give a message or suggest those sisters or women out there, have an ambition in your life and work for it. And do not underestimate your potential. If you have the will to do something, you will be able to do it. And trust me, if you don't save yourself, nobody in the world can save you. Thank you very much, Nida, for such a lovely message. If you don't save yourself, nobody is going to save you. This is the message of Nida Maqbool, who is the director of Care Corner Ranchi. And we are very proud of you. Jahaniman congratulates Nida Maqbool for being a woman of substance. And we wish them all the best for all her future endeavors. Thank you very much. Take care and bye-bye. Thank you. Allah Hafiz. Allah.